you so much all for joining us at CEPI, and this is one of our first demo lectures for gender studies. In this lecture, we will go through the syllabus of the subject, and we will see how it is relevant to other subjects and other optionals that you might be choosing, and how we're going to be teaching this course in the future, and how we're going to evaluate you and your assignments that we will be taking in throughout the course. So here we go. All right, so for those of you who weren't here earlier, my name is Fatima Noor, and I am a graduate in political science from Blackburn College, which is in Illinois, and I graduated in 2019, and so let's move on. And then my minor was organizational leadership, so I've studied different things throughout my undergrad. And let's look at gender studies. I want you to look through the syllabus of gender studies with me. So it's a 100 points subject. It's not a 200 points one. It's 100 points one, and most people do go for gender studies because it is very simple and brief. It has a very simple and brief syllabus. तो अगर हम यहाँ से देख लें तो इसका पहला टॉपिक जो है that is introduction to gender studies. So first you'll learn what it is, when it came into being, why it came into being, its correlation with women's studies, how it's different and everything. Here we'll see कि gender studies का impact क्या होता है with other जो जितने भी subjects होते हैं, जिस तरह की women's studies है, जिस तरह economics है, political science है. So how is it related to all of that? Here iski gender studies mein there's this debate that we will actually look into this debate today as well, which is the autonomy versus integration debate. And then we'll also look into gender studies as a discipline in Pakistan. Pakistan mein kis had tak people are studying it, what is happening, and where it stands today. And then we go into the history of it, like the history of gender, what is exactly gender, and whether it's socially constructed, whether it's natural, so natural versus man-made. Usme dekhte hain hum log ye sari cheezein. And then we go into feminist theories, because that is a very important part of it. Women's studies and feminist theories is basically how gender studies came into being. It was because of their struggles कि हम आज gender studies पढ़ रहे हैं. It exists around the world and in Pakistan even. We will study all the theories because there are multiple. हम सुनते भी आ रहे हैं. Liberal feminism, radical feminism है, Marxist है, socialist feminism है, analytical है, men's feminism, postmodern, and some of these theories you probably already heard of them already, and not in the context of gender studies. But if you're studying IR, if you're studying political science, you hear Marxist theories, radical theories a lot. This is all socialism, ये सारी चीजें हैं. So it's also relevant to gender as well. तो हम उसको इस angle से ही पढ़ते हैं फिर. And we further look down the syllabus, so हम देखते हैं कि जो feminist movements जो जितने रह चुके हैं, so the first, second, and third wave. We talk about feminism a lot, we talk about the theories a lot, but we don't really truly understand how it came into being and what was the reason behind it, what happened exactly, who were the main people who started the movement and started these waves, and what impact it had on the world, especially on Pakistan as well, because we are going to be studying it from Pakistan's perspective as well. Here we go into gender and development. So इसमें कुछ different theories or different models आ जाते हैं that we will be looking into as well. It's not hard, it's very simple. You just have to study it and understand it exactly what it is. I think that's probably the only chapter in gender studies that requires a lot of effort, that you have to truly understand. लेकिन इसके अलावा जो है everything else in gender studies is very simple. It's like once you start learning it, you understand okay, this is what we already talk about. We just don't know that we're talking about it. Like in our normal conversation, we हम ये बातें करते रहते हैं. अच्छा, after gender and development, we go into status of women in Pakistan. तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है. वो हम 4 different lens से देखते हैं. We look at women's health, कि women's health है, उसका क्या status है? How is everything going in Pakistan? Are women well nourished? Are they getting the nutrition that they are supposed to be, that is required for them? Do they have enough representation in health sector? तो इस तरह की चीजें हम देखते हैं. और फिर एजुकेशन में देखते हैं कि लिटरेसी रेट्स को हम देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज को हम देखते हैं,
which and what sector are women more inclined to go into, which is at this point हम देखते हैं कि अगर लड़की हुई तो she has to become a doctor. That's like the ideal जो एक field है उसके लिए. फिर employment देखते हैं हम लोग कि are women provided the jobs equally or not, or if not, so why not? If they are being provided, so what is the impact of it? हमारी economy पे क्या impact है, and कौन सी किस तरह की jobs वो कर रही हैं. तो we look at all that. फिर हम women in law देखते हैं कि ये सारी चीजें भी हम सब कुछ देखते हैं. मतलब we have to cover all of these angles. फिर आते हैं हम लोग gender governance पे, फिर आते हैं हम gender based violence पे, because that is a big topic in gender studies. It's very common in Pakistan, it's very common in South Asia, it's common around the world, not just in South Asia. दुनिया जो modern countries भी हैं, जो developed countries भी हैं, वहाँ पे भी this is a thing. फिर we do case studies. यहाँ इस पे usually question आता है, एक ने एक को उठा के आपसे पूछ लेते हैं कि write a note or something. जो मुख्तार है, she is a popular one, Malala Yousafzai, we all know who she is, and then Sharmeen Obaid, and we all know who she is. तो हम उनकी documentaries देखते हैं कि what it had, like what it focused on and how it's relevant in Pakistan and around the world. Okay, so those of you who haven't decided कि gender studies को हम pick करें या ना करें, why is it, like, should we opt it or not? Personally, if you, in my opinion, I might be biased, but gender studies is a very simple topic. It's a very simple subject in CSS. बहुत easily cover हो सकता है, जल्दी cover हो सकता है. It has a very simple and brief syllabus. In a month you can easily cover it. जो इसकी जो theories हैं, इसकी जो जितना भी इसका course material है, it's all very simple. It's all very easy to understand. You don't have to be a rocket scientist to understand it. और and it's very relevant to our रोजमर्रा की जो conversations होती हैं, to our we have someone else as well. Okay, so it's all very relevant, and especially for females, you're going to be able to understand very easily. And then even males, you see it as well, and it's like it's something you'll see it with your family. Like आपके जो घर में अम्मियाँ होती हैं, your sisters, and everyone, you'll see it with them as well, and you can have these conversations. So it's just a very simple and easy subject. So I will highly recommend that you go for it. क्योंकि easily cover हो सकता है. Plus it does correspond with other CSS options as well, which we'll look into as well. SMA, it helps a lot. Because SMA, there's always there's one essay about women rights पे, feminism पे कुछ ना कुछ आता है, which you can learn all in gender studies. वो आपका data सारा यहाँ से cover हो जाता है, and all you have to do is just put it together while you're writing the essay. So I actually have pulled up. Moderator, can you please unshare my screen again so I can show them the essay papers, past papers, if you're able to hear me. Can you hear me? I need you to unshare my screen for a moment because I'm not able to. Okay, I guess they're not able to hear me. So I was talking about essay and how it's important in essay. So if you pull up past papers from 2016 to 2020 or even 2021, you'll see there's always a topic related to women or feminism or gender equality. You'll see something like gender equality is a myth. Feminism के जो waves हैं उन पे आता है कि वो पाकिस्तान में relevant है कि नहीं. What are the waves of feminism? Women universities पे आता है कि how are they agents of change? So you'll see a lot of stuff like that, which is all being discussed in gender studies. And you get, हम इसमें क्या करते हैं, हम theories भी पढ़ते हैं, हम लोग feminist movements भी पढ़ते हैं, waves भी पढ़ते हैं, हम लोग जो radical feminism है, ये सारा कुछ है, वो we study that as well. We look into health sector, we look into education, we look into literacy, we look into women in law, we look into all of those aspects of it, women and technology. तो वो सारा कुछ आपका कवर हो जाता है. तो एक तो ऐसे आपकी, if you study gender studies, आपकी एक ना एक ऐसे तो हो ही जाती है for there. And then other than that, it's really relevant in sociology. कुछ जो इसकी terminology है, कुछ जो इसकी theories हैं, topics हैं, that is relevant in sociology.
We already saw in the syllabus case में radicalism, socialism ये सारा कुछ है, तो we just like give it a new spin with gender studies. तो वो सारा भी आपको यहाँ से हो जाता है. It also dips into there as well. My screen is stuck again. Moderators, can you please unshare my screen? I'm not sure what to do here. I don't know. Okay, I was talking about. Okay, are you able to see this screen right here? I mentioned essay वाली बात कि essay में there's always something relevant. So I wanted to. I'm not sure why. Okay, I wanted to share. Are you able to see this screen that I'm sharing, this new screen? Okay, let me try again. Okay, I think you are able to see now. Okay, so I mentioned essay वाली बात कि essay में ये dips बहुत ज़्यादा relevant है, and we'll look at some of the past papers के उसमें essay में कौन से question आया था, कौन से topic आया था जो कि gender studies से relevant है. So this is from 2020 और इसमें आया हुआ है कि women universities as agents of change. तो very relevant, यही से हम pick कर सकते हैं. You can learn that from gender studies. अच्छा, let's go to this one. यहाँ ये है from 2019. इसमें है new waves of feminism in our culture. We study feminism. उनकी सारी waves हम पढ़ते हैं, हम पाकिस्तान को देख के पढ़ते हैं, उसी की लेंस से पढ़ते हैं. So it covers your essay वाला सारा कुछ. This is 2017. Right here, feminism is not really a third world issue. ये आपको यहाँ पे stance लेना पड़ता है. तो you can, and how would you take a stance on this topic? By learning कि is it a third world issue or not? Feminism है क्या चीज़? How is it relevant? तो ये चीजें हम देख के पढ़ लेते हैं, राइट. और इसके अलावा जो है फिर आते हैं हम लोग 2016 के पेपर में, एंड दैट इज जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ. और यही टॉपिक जो है 2021 की ऐसे में भी आया था, इसी को मतलब थोड़ा मोल्ड करके, बट दिस वाज बेसिकली द टॉपिक एज वेल. तो 2016 से लेकर 2021 तक ऑलमोस्ट सारे पेपर्स में जो है ना जेंडर स्टडीज के रिलेवेंट कुछ ना कुछ टॉपिक आया हुआ है. तो आपके जो इफ यू प्रिपेयर जेंडर स्टडीज रियली वेल, आप एक जो है टॉपिक कवर हो जाता है फिर CSS ऐसे, जो कि सब बहुत एवरीवन इज रियली अफ्रेड ऑफ इट. यूजुअली हम इसी को बहुत ज़्यादा ड्रेड करते हैं. तो दिस विल मेक योर लाइफ इजियर. और फिर हम आई वांटेड टू शो यू पास्ट पेपर्स एज वेल फॉर जेंडर स्टडीज. अगर आप क्वेश्चन उनके देखें, एंड द रीजन आई रिकमेंड ऑप्टिंग जेंडर स्टडीज इज के इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इसमें डबल साइडेड क्वेश्चंस होते नहीं है, आपसे बस टू द पॉइंट बात पूछी जाती है, एंड यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड द डेटा, एंड यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड इट इन अ वे कि द एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स इट. इफ यू लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस, अब यहाँ पे ये है, दिस इज फ्रॉम 2016 के स्टेटस ऑफ वुमेन स्टडीज इन पाकिस्तान. दैट्स अ टॉपिक वी आर गोइंग टू बी स्टडीइंग. और जो ऑटोनॉमी इंटीग्रेशन डिबेट है, वेरी सिंपल, वेरी इजी. और इफ यू लुक एट ऑल ऑफ देम, लाइक राइट नोट ऑन वुमेन्स मूवमेंट इन पाकिस्तान, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, थियोरीज जो हैं, व्हाट इज फेमिनिज्म. अच्छा, दिस इज 2016. इसके पेपर्स के बाद आते हैं हम लोग 2017 के पेपर में के discipline of gender studies and how it's different from women's studies. So if you notice, like, the simplicity and the straightforwardness of the question is what attracts me towards gender studies in CSS. कि आपको कोई tricks इसमें नहीं है, इसमें बस simple आपने कुछ पढ़ना होता है, and which we'll all learn in this class. Extra आपको effort भी नहीं डालनी पड़ती, and then you just have to reproduce that information. You don't have to go anywhere else. You don't have to do anything else. It's just very simple and very straightforward and easy to go with. तो यहाँ पे अच्छा, what is the status of health, women's health in Pakistan? हम इसको already पढ़ते हुए हैं, and then secondly you also learn this in current affairs. तो ये current affairs में भी हम जो reports वगैरह आती हैं हर साल, तो वहाँ से भी आपका cover हो रहा होता है, but this helps there as well. अच्छा, फिर से वही बात, repetitive questions बहुत ज़्यादा है. Autonomy versus integration debate यहाँ पे भी आ गया, वहाँ 2016 में भी आया हुआ था. और let's look at, this is from 2020, जो इससे पहले वाला आया था. अच्छा, gender has multiple meanings. How do you deconstruct the word gender? Very simple, very easy.
language is gendered, what does this imply, explain examples. ये question very interesting, very simple, आप कर सकते हो बहुत आसानी तरीके से, and I'll teach you how to construct your answers. ठीक है? तो and then right here शर्मीन जो है उन पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, and you have 3 case studies. तो 3 case studies में जो है ना, आप तीनों में से 2 भी पढ़ लोगे तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है, and you can easily cover it. And plus we heard about this, and this is something we have heard all the time in the news. हमने सुना हुआ है कि शर्मीन की जो डॉक्यूमेंट्री थी वो किस चीज़ पे थी, मुख्तार माई के साथ जो हुआ था वो क्या था, we hear this all the time. Malala Yousafzai के साथ जो हुआ था, what happened and what is she doing right now, like, and even if we don't want to, we hear this all the time and we learn about it all the time. तो बहुत relevant चीजें हैं, बहुत easy हैं, बहुत you can easily repeat. I cannot emphasize enough कि कितना simple होगा आपके लिए gender studies if you do go for it. अच्छा जी, let's go back to the हमारे जो slides हैं हमारे. Okay. So हम लोग अब इस कोर्स में अगर if you do opt and join us, यहाँ पे हम क्या करेंगे, what are we going to be covering? तो let's, अच्छा जी, तो हम लोग जो है ना basically the way we're going to design this course is हम लोग syllabus FPSC की जो syllabus है उसी के according जाएंगे. We'll cover each and every topic, जिस तरह मैंने आपको भी syllabus दिखाया भी है, and I will also show you कि हम किस तरह से ये सारे lectures को divide करेंगे. This will be it will be covered in 10 different lectures. तो उसमें जो है हम हर टॉपिक को in detail with examples, with videos, with extra material, with extra readings हम इसको सारा reconstruct करके पढ़ेंगे. आपको I'll teach you how to make notes, and उनको सारा जो है evaluation हम करेंगे, paper attempting skills. तो हम लोग, and this is what I like to do, कि हम लोग जो topic पढ़ेंगे ना उसी की topic पे हम लोग जाके from the past papers we'll pick out questions, and then I'll have you attempt all those questions. And आप outline बना सकते हो if those who want to, and if you want to attempt the whole question you can do that as well, and then you will send that to me. So that way you'll have outlines made out. By the time you're done with this course, you will have outlines of all the past papers, which is very helpful because that is the only way you can cover CSS के सारे syllabus. You keep making outlines, you keep आप जब आपके जब exam होता है ना, at that time you don't have enough time to go through all of your notes. नहीं जा सकते, there is no way for you to like study all of that because you have 2 exams in a day, you don't have enough time. So what you do is you just look through the outlines and it helps you recall what you had learned throughout the course. So I highly recommend कि हम आप लोग बनाएं whenever I do assign के जो questions होते हैं, and not just for gender studies, this is for all other subjects as well. आप जो है ना ऐसे political science जितने भी आपके हैं, go back to all of past papers. Not आप सारे तो कर नहीं सकते, but 2016 से लेकर 2021 तक जितने भी हैं, make outlines for them. And then when exams comes up and जिस time आपने revision करनी होती है, you can just simply go through the outlines and you can recall everything that you had learned. ये like I said, हम आपके evaluation करेंगे, individual guidance आपको होगी, you can always reach out to me. हम मतलब timing set कर लेंगे ना, तो you can video chat with me, you can get on a call with me, or you can message me, and we will talk about how we can improve your preparation and what needs to be done, where you are lacking, what your strengths are. हम उन सबको evaluate करके ही आपको help out करेंगे. And I will be sharing notes with you guys. I will be sharing extra materials. आपको कोई questions होंगे तो you can always reach out to me as well. And towards the end or closer to the exam, we will be conducting mock tests, जो कि आप कर सकते हो, and हमारे जो बहुत qualified subject specialists हैं, they'll be able to check your exams and they'll provide feedback and tell you what to improve and where you need to be working on. अच्छा जी, तो हम लोग जो है ना आज सिंपली हम लोग स्टार्ट ही जेंडर स्टडीज करते हैं कि है क्या चीज, एंड व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू बी लर्निंग इन दिस कोर्स, एंड तो दिस इज लाइक काइंड ऑफ द डेमो लेक्चर दैट वी विल बी डूइंग. तो द वर्ड जेंडर इटसेल्फ, नॉट जेंडर स्टडी, द वर्ड जेंडर इटसेल्फ, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 एक्सप्रेशंस. एक तो जेंडर आइडेंटिटी होती है कि हम लोग मेल है, फीमेल है. फिर उसके बाद जो है this might be a little complicated, it might sound a little complicated, but it's not. And if you have questions, you can just type in the chat and I will be more than happy to explain even more. तो एक हमारी जेंडर आइडेंटिटी होती है कि हम I recognize as female, ठीक है, मेल एंड फीमेल 2 genders हो गए हैं. फिर जो दूसरी चीज आ जाती है वो है जेंडर एक्सप्रेशन.
कि आप एक्सप्रेस अपने आप किस तरीके से कर रहे हो. Some people have more of masculine traits even if they're female. Some have more of feminine traits. और आप US में ज़्यादा देख सकते हो कि you'll now see, I'm not sure how aware you are of this, but you'll now see कि वहाँ पे जो है men have started to wear makeup. वहाँ पे जो है females, हम जो tomboy कहते हैं, they are started to dress up as जो socially acceptable dress up होता है for men. तो वो उनका expression है. They express a specific gender even if they're not that. फिर है हमारे biological sex. तो वो क्या होता है, वो हमारी जो biology है, what is our biology dictating. हमारा तो that is based on your genitalia. तो बस the moment you're born, doctor says it's female, it's a male. और या आपकी जो जब अल्ट्रासाउंड वगैरह हो तो उसमें आप कहते हो that's biological. तो वो जो है ना, that is your biology. That is something you cannot change. लेकिन gender identity and gender expressions, ये जो है ना, this is something we feel and something we say, जो हमारा socially constructed है. तो like socially constructed versus natural. तो जो biology है, that is natural. वो बस अल्लाह का दिया हुआ है, and जो है that is what it is. But identity, ये जो labels हैं, male, female, transgender, queer, ये सारा कुछ जो है, this is man-made. ये जो है हम इंसानों ने जो है ना label बनाए हुए हैं. तो that is where gender studies come in, that is where women studies come in, and they अभी जो LGBTQI जो वेस्ट में चल रहा है, and even in India and some other countries as well, they all question that. यही चीजें question हो रही होती हैं. Okay, so gender studies जो है ना, it's a interdisciplinary, transdisciplinary area of study. It is not just about one thing. हम इस तरह नहीं करते हैं कि हम सिर्फ एक gender को उठा लें, उनको पढ़ लें. We're not doing that. We're looking at it कि how is gender impacted by different norms or gender relations and identities from intersectional perspectives. कि different जो लोग होते हैं वो किस तरह इसको perceive करते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या देखा जाता है. और उसमें ये देखा जाता है, we focus on how gender is related with other categories like ethnicity, class, sexuality, identity, nationality, age, disability. तो जेंडर इज मतलब इसको अलग से नहीं पढ़ते. बस अगर अलग से हम इसको पढ़ते हैं ना, तो बस फिर तो मेल और फीमेल की बात ही आ जाती है. एंड देन देयर इज ट्रांसजेंडर्स, तो उसको हम सिर्फ पढ़ते हैं. देन दैट्स जस्ट बायोलॉजी, हम उसको पढ़ते हैं. बट नो, वी फोकस ऑन कि इन एवरी एथनिसिटी जेंडर को कैसे परसीव किया जाता है. अब हम पाकिस्तान में देख लें, तो इफ यू आर फ्रॉम KPK, यू विल सी कुछ अलग से पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग मेल एंड फीमेल. ठीक है. बट इफ यू आर फ्रॉम पंजाब, इट्स गोना बी अ लिटिल डिफरेंट. एंड इफ यू आर इन पाकिस्तान, तो हमारा बिल्कुल डिफरेंट है. फिर उसके बाद वेस्ट से आप देखो, तो वेस्ट में you'll see a different perspective about gender. कि there is no there, मतलब वहाँ पे जो है ना, इतनी tight specific roles नहीं होते. Men can work female jobs, female can work male jobs, जो कि यहाँ पे हम कहते हैं ना. अब हमारे यहाँ पे है कि an example of that would be कि nurse, being a nurse, that's you mainly see that females doing that. ठीक है. ये जो है ना, हम इसको हम perceive ऐसे करते हैं कि nurse जो है female होती है. While that's not the case, there are male nurses बहुत ज़्यादा, and they opt for that field a lot. तो इसको जो हम जो specified roles है, तो उसको हम discuss करते हैं. ठीक है. और अच्छा, in different classes. फिर कि क्लास का क्या मतलब है? क्लास का मतलब ये है कि मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, अपर क्लास है. तो उसमें जो है ना, जेंडर किस तरह परसीव किया जाता है in each class. So we discuss that as well. फिर sexual identity, which comes to LGBTQI जो है, उसकी heterosexual, homosexual, वो सारी चीज़ हम देखते हैं कि वहाँ से it relates to that as well. फिर हम nationality भी जाते हैं, age, disability, सारी चीज़ें हम देखते हैं कि gender study में like all of that is being focused on. It is not just one thing. It is not just gender. It is how it is relevant to these categories. अच्छा, तो like I said, मैंने earlier I said this कि gender studies is something this is something we talk about every day. This is something that is being discussed every day. ये हम इसको socially भी इसके बारे में बात करते हैं कि like even when you are having conversations with your friends, male female के जो roles होते हैं, हम उनको discuss करते हैं. Political institutions में कि representation कितनी है. Quota system की बहुत बात होती है, and it is being criticized these days a lot. तो how is that relevant there? वो सारा ये examine करता है कि politics में when did women enter?
how are they, like how are they performing, why are they doing what they're doing, and if there are any limitations तो वो क्यों है, and if there aren't any तो वो क्यों नहीं है. तो अभी जो conversations जो होती हैं, हम लोग ये बात बहुत proudly कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो, वो जो first prime minister ना, अभी न्यूजीलैंड की जो prime minister हैं, तो the way she is doing performing her duties as the prime minister of New Zealand, she is बहुत ज़्यादा, मतलब everyone is really enjoying it, everyone is really liking it, everyone is जो उनकी leadership है उनको बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि यार this is something we can learn from, any country can learn from that. तो in politics it's involved, ठीक है, जो literature है उसमें involved है. हम when we go further we'll learn about gendered language. जनरल लैंग्वेज क्या होती है, वो लिटरेचर से बहुत रेलिवेंट है कि जो हम whatever we write, हमारी जो लैंग्वेज है इट्स वेरी मेल डोमिनेंट. हम कभी ये नहीं करते कि एग्जांपल्स में हम ये नहीं करते ना कि she did that, मतलब हम हमेशा जो है ना मेल डोमिनेंट वर्ड्स विल यूज दोज, ठीक है. लाइक फॉर मेल अगर हम कुछ यूज करेंगे तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग का वर्ड यूज करेंगे. फॉर फीमेल विल आल्सो विल ऑलवेज यूज ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट स्पोकन एंड इस तरह की बातें. तो ये सारा कुछ हम यहाँ पे देखते हैं. फिर हम देखते हैं फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशंस एज वेल कि जो इन प्रीवियसली हमारे जितने फिलोसफर रह चुके हैं, एंड इफ यू टेकिंग पॉलिटिकल साइंस you're going to be studying a lot of philosophers. तो फिर उसमें ये जेंडर जो है ना, जेंडर स्टडीज टेक्स अ जैब एट दैट एज वेल कि कौन ज्यादा प्रो वुमेन थे, कौन नहीं थे, एंड व्हाट वर देयर वर्क्स लाइक, ठीक है. और फिर हम हिस्ट्री को ऑब्वियसली देखते हैं कि हिस्टोरिकली जेंडर स्टडीज इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, हाउ इट केम इनटू बीइंग. अच्छा, तो जेंडर स्टडीज जो है ना, इट इज स्टिल वेरी न्यू एज अ डिसिप्लिन. It's still looking for an identity in society. It's not being widely accepted. Pakistan में देख सकते हैं. In many countries we can see it as well. Even in the West, actually, like the university I went to, they didn't have gender studies as an undergraduate degree, and that's America, like बहुत liberal country, बहुत ज़्यादा. And my university was a very liberal university, but they didn't have anything like that because this is something people don't opt as much, you know. ये हम इस तरह it's still looking for, and you know, and what we mean by an identity is कि हम यूनिवर्सिटी इसलिए जाते हैं कि कल हमने एक जॉब ढूंढनी है. तो it's being questioned कि what am I going to do with this degree and how it's going to help me in a job. तो अभी भी जो है ना, it's still a very young discipline and it still has ways to go to figure out कि आगे इसने क्या करना है, how it can be further improved. At this point gender studies जो है research में बहुत ज़्यादा काम दे रही है. Because it is learning about the knowledge gaps of everything के male और female differences हैं, जो different genders हैं, और उनका जो impact है on the economy, politics and जो social जो acceptable बातें होते हैं, तो उस पे ये देखा जा रहा है सारा कुछ. अच्छा जी, and then ठीक है. तो gender studies is also it's a hot topic. थोड़ी डिबेट इससे बहुत ज्यादा होती है कि some people are very in the favor of it, और ये आप देख रहे हो, you can see it in our society कि हमारे बहुत आप सोशल मीडिया पे जाके चले जाओ, ट्विटर पे किसी दिन एक दिन चले जाओ and just like learn about this कि some people are going to be strongly endorsing it, बहुत ज्यादा इसको सपोर्ट देते हैं कि जो जेंडर की जो जितने भी टॉपिक्स होते हैं इन पे बात करना. और some people will just completely outright say no to it. I've personally seen it myself कि even जब मैं when I was taking these classes ना, तो उसमें मैंने देखा हुआ था कि like I've seen very strong supporters of it, and then I've seen very strong people who just completely say no to the idea of it, learning about it, and it's just not accepted. It's still, like I said, it's still looking for an identity. तो कुछ लोग तो completely इसको करेंगे, कुछ नहीं करते. अच्छा, and why is it important? तो जो gender है, gender/sex, it plays a very important role in all aspects of our life. हम जो है ना इसका impact हम politics में भी देखते हैं, economy में भी देखते हैं, ठीक है. और जो हमारी जो work life है उस पे हम you can see it कि हम we're trying to figure out कि हमारे बहुत work places we're trying to figure out कि हम इसको कैसे जो है ना more gender friendly बनाएं कि some arenas you'll see कि there are it's more male dominant, some arenas you'll see कि they are more female dominant. तो अब देखें teachers जो होती हैं you'll see more female teachers than male teachers,
So why is that? Why is that happening? It has an impact. It has a high impact on our society. And then ये तो एक बहुत बड़ा societal बात हो गई. फिर उसके बाद intimate relations पे भी बहुत ज़्यादा इसका वो है घर में, you know, it just plays a big role. हमारे जो हमारी जो society है ना, everything is looked through gender classes. This I put that in inverted commas कि आप understand करें कि gender class is a terminology कि हम, like for instance I'm wearing these glasses so I'm able to see what I'm doing. तो हमने जो है ना सब कुछ जो है everything around us has been put into gendered categories. And who is actually forming these categories? Who is, like, you know, forming this bubble around us? वो कौन है? Media हो गई है. Institutions, by institutions we mean कि schools, colleges, universities, हमारी families, social networks and everything. And I'll give you an example of this. I remember I was taking a class in university, media literacy की class हम ले रहे थे, और हमारे एक project था, हम लोग we were trying to learn कि जो मीडिया है उसका इम्पैक्ट कितना है हम पे, ठीक है. एंड माय पार्टनर एंड आई, वी, हमारा जो टॉपिक था ना, हम लोग ये देख रहे थे कि मीडिया जो है, लाइक व्हेन यू आर यंग, फ्रॉम अ वेरी यंग एज, it it divides things into boy and girl. मतलब ये जेंडर क्लास की जो हम बात कर रहे हैं ना, कि ब्लू पिंक की जो बात हो जाती है. तो हाउ वी डिड दैट, वी वेंट टू, हमने कुछ एड्स उठाए, जो जो इश्तिहारात जो होती है ना, जो किसी गाड़ी के लिए इश्तिहार हो या बारबी डॉल के लिए कुछ तरह हो, लेकिन बट दोज दैट वर टारगेटेड टुवर्ड्स चिल्ड्रन, जो कि 4th-5th क्लास के जो बच्चे होते हैं. we picked out I think 10 different ads और जो वीडियोस हमने पिक आउट किए, and then we went to 5 different schools, और हम लोग 3-4 क्लास थे, वो हमारी टारगेट ऑडियंस थी. So we would show them those ads, ठीक है, and we'll ask them कि what do you think कि ये प्रोडक्ट किसके लिए है. तब हमने एक था उसके लिए, क्या कहते हैं, it was a oven, जिसमें हम कुकीज वगैरह बेक कर सकते हैं ना. तो एक उसका एड था. तो अब उसमें मतलब they didn't say कि मेल फीमेल इस तरह कुछ भी नहीं था, but the way it was colored, the way it was presented, वो एक gendered classes के उससे present किया गया था. तो from a very young age, 3 क्लास के बच्चे कितने होते हैं, they are very young, उनको ये चीजें नहीं पता होती ना, they don't understand social identities, they don't understand genders, they are just children, they are just living their life. तो from that very young age हमारी जो मीडिया है उनको एक brainstorming से चल रही होती है, and they're teaching them कि blue is a male color, pink is a female color, and जो ovens होते हैं वो लड़की के लिए होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं लड़कों के लिए होते हैं. And you know that's how, like, that's how it happens हमारी families में. You can see from a very families, तो हमारा एक पहला जो institution है वो family ही है, कि हम वही से सारा कुछ सीखते हैं. एंड वहाँ पे यही होता है कि लड़की को पिंक कपड़े पहनाओ, लड़के को ब्लू कपड़े पहनाओ, लड़का इंजीनियर होगा, लड़की डॉक्टर होगी. तो इट स्टार्ट्स ऑल फ्रॉम देयर. एंड दीज ये जो एक कॉन्सेप्ट बन गया है ना कि ये मेल ये करेंगे जो हमने जो स्पेसिफाई किए हुए रोल, एंड देन फीमेल ये करेंगे, दिस इज ऑल सोशली कंस्ट्रक्टेड. एंड हु डज इट? हमारे स्कूल्स, हमारी फैमिलीज, मीडिया, और जितने भी मतलब दूसरे जो अरीनाज में जब वहाँ जहाँ पे हम होते हैं, वो सारा कुछ यही से हम पिक करते हैं चीजें. दिस इज नॉट समथिंग यू लर्न नेचुरली, यू आर नॉट बोर्न विद इट, दिस इज समथिंग यू लर्न इन सोसाइटी. Okay, so let's look into the history of gender studies. Gender studies, how it came into being, and why, how it's relevant. So it basically comes from humanities. It's in social sciences. ये जो है ना उसी के उस basis पे आती है कि जो like when you study gender studies, you're studying humanities, you're studying social sciences, क्योंकि research वगैरह हो रही है इसमें you will, like, you know, if you have a degree in if you know someone who got their bachelor's or master's in gender studies, you can ask them कि उनकी final जो projects से वो क्या आते हैं. तो you'll see कि they usually do like research on it, कि what different topics they can pick out and they do research on it. Medicine कभी like it draws knowledge from medicine as well, क्योंकि हम biology पे बहुत discussion करते हैं, और natural sciences में से भी ये बहुत ज़्यादा, natural sciences में क्या आ जाता है, biology आ जाती है, chemistry आ जाती है, सारी चीज़ें. तो यहाँ वहाँ से भी इसका बहुत ज़्यादा knowledge आता है gender studies. तो like it is a it's a product of all these different disciplines, and that's how gender studies came into being. अच्छा, gender is as academic field now.
तो it is very new. Gender studies बहुत नया डिसिप्लिन है, 1970s में ही स्टार्ट हुआ था. It might feel like it's old, but it's not. 1970s was not that long ago. It was very recent. And then अगर हम compare करें from with other जो fields हैं, तो फिर हम देखेंगे कि gender studies is basically a baby of all fields. And why it happened was कि जो women थी in academia, जो कि academics में थी, मतलब teachers थी, students थी, whatever, they protested, कि वो लोग protest कर रही थी, they resisted कि जिस तरह के जो academic knowledge जो जिस तरह produce हो रही है ना, उसमें basically जो female होती हैं उनको invisible किया गया हुआ है. और जो power relations हैं, and this is also another terminology that we will deconstruct as we go into this course, कि power relations क्या होते हैं. Power relations ये होते हैं ना कि someone who is, अब देखें हमारे एक प्रोफेसर है and then there's a student, so there's like a power relation. जो प्रोफेसर है that he has or she has a lot more power as compared to the student. तो उसको ये स्टडी करता है कि वो how it has an impact and how the person who is not in charge is impacted by that, and किस तरह वो limit हो सकते हैं. तो जो women in academia थी at the time, they were very oppressed and they were not able to be to represent themselves. तो ये जो है ना उस टाइम से 1970s में प्रोटेस्ट वगैरह होती, this was also a hard time for जो फेमिनिज्म की जो मूवमेंट्स चल रही थी. तो उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा, इसीलिए it came into being because of those movements, because of those protests. तो जो writers थी, जो literary poets थी, जो कि उस टाइम they were trying to get knowledge about women's studies, उन्होंने ही ये एक movement start की कि we need a specific discipline just to study all this. तो that led to कि यूरोप में जो है ना, यूरोप में what happened कि यूरोप में centers were set up for women's studies. अब हम आगे ये भी देखेंगे कि gender studies और women's studies are two different things. तो but it starts with women's studies because female were the ones who started the protest and everything. ठीक है. तो यूरोप में जो है ना centers जो है for women's studies were set up, and the reason they were set up कि जो teachers or students हैं जो those who wanted to study gender relations and women in particular could be a part of that center, and they could gather there, and they could do research, they could have discussions, they could come up with मतलब books लिख सकते थे, papers publish कर सकते थे, and this was like a resource for them. So basically a center was a resource for them to fill out those gaps जो कि missing थी. और जो gender studies है, like I said earlier, कि it has strong links to women's movements, और जो activists थी at times feminists जो थी उस time पे, it derives from there. वो feminism movements चली, waves different चली, and one of the products was gender studies कि this came into being. Women demanded representation, the gender studies came into being. अच्छा, so we're going to look into the feminist perspective of women's studies at the time. तो feminists जो थी उस time पे, they criticized gender inequality क्योंकि there was आज भी है, gender inequality is still thing. इसीलिए CSS में क्वेश्चन पूछा जाता है कि gender equality is a myth or gender equality is a myth, and the reason for that is कि it's still a hot topic क्योंकि not just in 1970s, in 2021 even, people are not equal. Women and male and female are not equal, and you can हम इस पे मतलब this is a hot debate. हम इससे बहुत सारी बातें कर सकते हैं. We can look at it from different angles. हम political point of view से भी देख सकते हैं, social point of view से भी देख सकते हैं, economic point of view से भी देख सकते हैं, education, health, technology, हम उन सब में देखा जा सकता है कि अब आजकल एक STEM साइंस टेक्नोलॉजी और जो है ना इसमें हम देख रहे हैं कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा नहीं है. तो that, and why is that happening? क्योंकि gender inequality है, that is something that does not invite more females. So there is an inequality. ठीक है. Glass ceiling आपने terminology सुनी होगी. Can someone tell me what glass ceiling is? Chat में आप please type कर दें, or you can unmute yourself as well. Can anyone tell me what glass ceiling is? What a glass ceiling is?
Shafiq, would you like to tell me what it is? Yes, glass ceiling. अच्छा, glass, अच्छा चलिए मैं I'll tell you, it's okay. तो अभी glass ceiling जो है ना, it's a terminology used for जो कि एक barrier है. Yes, exactly, that's right, Shafiq. It is a barrier to stop growth of women in particular organizations. और इसको glass ceiling क्या होती है? Ceiling छत को कहा जाता है. That's what exactly it means. Ceiling is literally a छत. तो glass ceiling क्या होती है? It is an invisible छत. ठीक है, हम कहते तो हैं कि वुमेन एंड मेन हैव ऑल द राइट्स, दे आर इक्वल, जाए ना करें ना आप, आपने जो करना है, but that's not really a case. There are multiple things, multiple factors that are stopping women from achieving what they want to achieve. और अब अगर हम जाए ना, अब for instance, this is an example from my own family actually. Someone was trying, one of my family members, they अभी वो अपनी special, उन्होंने MBBS भी किया हुआ है, she got done with her house job जो होती है, वो सारा कुछ हो गया, and she was trying to figure out कि आगे जो FPSC के एग्जाम्स हो देते हैं and then you start your specialization वाली training start करते हो आप, right, 4-5 years की जो होती है, तो she was trying to figure out कि कौन से field में she should go for it, right, she was trying to choose one field. अब there are two main categories, एक medical होता है, एक surgery होती है. तो मेडिकल जो होता है वो वही होते हैं जो डॉक्टर्स बैठे होते हैं, वो दे आर ट्राइंग टू डायग्नोज और आपको मेडिसिन देते हैं. सर्जरी में सर्जरी, यू नो व्हाट सर्जरी इज, राइट, जो सर्जन्स होते हैं. तो शी वाज डिस्कसिंग विद मी एंड आई टोल्ड हर कि व्हाई डोंट यू गो फॉर सर्जरी, and they, you know, because it's more fun, मतलब आप hands on experience होता है and what not. तो वो मुझे यही कहती हैं कि सर्जरी जो फीमेल होती है उनका स्कोप नहीं है सर्जरी में. And I asked her why she thinks that. I haven't been in Pakistan for a long time and medical is something ये मेरा field ही नहीं, मैंने कभी इसको discover नहीं किया, तो I was trying to learn about it. And then she was telling me कि अगर आप notice करो ना, you will never, you'll barely see a female surgeon. तो हम, I live in Peshawar at the moment, तो we were discussing कि पेशावर के जो hospitals हैं, and in every field मैंने मतलब नहीं सुना, I've never heard of a female surgeon in Peshawar. ठीक है, and there are like, मुझे सिर्फ 2 नाम सामने आए थे and we had to research it कि there were 2 female surgeons. तो why that is, अभी अब हम कह तो सकते हैं कि male and female they have equal opportunity कि आप जाओ, you can apply for it, you can take the exam, you can pass the exam and you can start, right. लेकिन there is a certain glass ceiling कि वो नहीं कर सकते हैं because there are limitations, क्योंकि जो male होते हैं, male जो female होते हैं, वो just 1 second please, वो जो है ना, दे हैव जो फीमेल्स होती हैं उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती वंस दे एंटर दैट फील्ड, राइट, उनको नहीं दिया, दे आर नॉट अलाउड टू, दे आर नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी, तो दी ही नहीं जाती. दैट्स अ सर्टेन ग्लास सीलिंग, लाइक ऑन सरफेस यू विल सी कि ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, बट देयर आर सो मेनी बैरियर्स दैट वी आर नॉट रियलाइजिंग इट. वो वंस यू आर इन दैट फील्ड आपको फिर पता चलता है. दैट इज समथिंग व्हाट ग्लास सीलिंग इज. अगर हम आप कॉर्पोरेट ऑफिस में अगर आप देखो तो you'll see के there aren't many female CEOs. अगर numbers compare करो ना तो basically male CEOs होती हैं सारे, और जो management की positions में होते हैं वो male ही होते हैं, not females. And the reason for that is there's a glass ceiling. वो उसको एक level तक आप जा सकते हैं, but after that you're not able to promote further than that. अच्छा जी, तो we were talking about gender equality, that's where glass ceiling comes from. And gender inequality और equality में ये बात बहुत चलती है, and you'll hear this terminology a lot. अच्छा, तो जो feminist थी at the time 1970s में, उन्होंने academics जो थे, जो कि education at the moment चल रही थी, उसको बहुत ज़्यादा criticize किया. And the reason for that was कि basically जो female makes up the 50% of the जो population है ना दुनिया की, तो there was no information on that. Genders जो है ना, उन पे कुछ information थी ही नहीं कि उनका like what is their role, क्या क्या चल रहा है, कुछ भी पता नहीं था. उनका जो social perspective पे कुछ नहीं था. There was nothing about their health, there was nothing about उनकी जो participation है economy में. अब एक topic चलता है gender studies में, and people who study gender studies and people who are into this, they'll know about this, कि अभी अगर आप when I was taking my economics class, and when I was undergrad, na, so I was taking economics classes.
तो इकोनॉमिक्स में हम लोग ये चीज़ देखते हैं एज वेल, जेंडर स्टडीज में भी देखी जाती है, एंड द रीजन वी लुक इनटू दैट इज के अब लाइक हमारा एक कॉन्सेप्ट है ना कि फीमेल शी स्टेज एट होम एंड मेल So I want you to follow this because this is where you see कि gender studies is so relevant in every aspect of our life. ठीक है. अब economics में हम देखते हैं ना, this is economy. तो अब जो है ना, अभी this is not relevant in Pakistan, but like in US में जो है ना, some economists they're trying to come up with this new formula जिसमें they're talking about कि जो मेल तो जाते हैं जॉब करते हैं, they're earning money, right? ठीक है, and that is a given. And we count that कि this is helping the economy, इसमें उनका क्या impact है. But what about those females जो stay at home moms होती हैं, जो घर में होती हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा रही हैं, and they're doing the chores and everything. तो they're trying to come up with this new formula जिसमें आप recognize करो कि female sitting at home and raising children is also helping the economy. अभी तक जो है इकोनॉमी में इसको नहीं देखा, इट वाज लाइक इट हैड गॉन अननोटिस्ड. अभी हम लोग इस फॉर्मूला को कर रहे हैं ना, एंड व्हाई इज दैट इज बिकॉज ऑफ जेंडर स्टडीज कि ये कॉन्वर्सेशंस होती रही हैं सिंस 1970s एंड वी केप्ट हाईलाइटिंग जो जो उस टाइम की फेमिनिस्ट थी, जो उस टाइम की जो एक्टिविस्ट थी, एंड दे केप्ट ऑन हाईलाइटिंग इट कि यू आर इग्नोरिंग कि मतलब द रीजन मेल कैन गो आउट and work and earn money is because a female is staying at home and taking care of the children. What if she was not doing that? फिर क्या होता? So that was the question, right? फिर क्या होता? What would happen? So that is why अभी एक नया formula, this is being debated right now. It's not saying we hold well again. This is in conversation, and that is happening because of gender studies. तो बेसिकली जो उस टाइम की जो उस टाइम में जो क्रिटिसिज्म यही चल रही थी कि आप लोग नहीं रिकग्नाइज कर रहे हो फीमेल कंट्रीब्यूशन को, और जो उनका जो इम्पैक्ट है ऑन द सोसाइटी, ऑन द इकोनॉमी, ऑन पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग, उनको देयर वाज एन इनइक्वालिटी, तो दैट वाज ऑल बीइंग डिस्कस्ड. ठीक है. अच्छा, तो अभी हमने वी डिड सी अ क्वेश्चन, राइट? हमने एक क्वेश्चन देखा था पास्ट पेपर्स में कि जेंडर स्टडीज और वुमेन स्टडीज में क्या डिफरेंस है. अभी हम अगर व्हेनेवर यू टॉक अबाउट जेंडर स्टडीज, हम यही सोचते हैं कि यार ये तो बस सिर्फ वुमेन स्टडीज के बारे में बात करेगा. दैट इज नॉट द केस. जेंडर स्टडीज जो है ना, इट इज इट कवर्स ऑल जेंडर्स, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर. अब पाकिस्तान अगर हम देखें ना, जो नॉट जस्ट पाकिस्तान, अराउंड द वर्ल्ड, द जो द जेंडर दैट इज बीइंग टेकन एडवांटेज ऑफ, जो कि सबसे ज्यादा अप्रेस्ड जेंडर है, दैट इज ट्रांसजेंडर्स. जो हमारे पाकिस्तानी में देख सकते हैं हम लोग, इन अदर कंट्रीज एज वेल, बट स्पेशली इन पाकिस्तान देयर इज नो वन एल्स जो कि पूरे कंडीशंस में है देन ट्रांसजेंडर्स. दे आर बीइंग किल्ड ना. उनको तो अभी रिसेंटली उनको आइडेंटिटी कार्ड दिया जा रहा है जिसपे उनका जेंडर एक्स है. अभी आई रिसेंटली सॉ एज वेल के पास्ट ईयर मैंने देखा था कि एक यूनिवर्सिटीज फॉर ट्रांसजेंडर स्टार्ट हो रही है. लेकिन इट्स हैपनिंग नाउ, जस्ट नाउ, और ये स्टार्ट है अभी भी जो है ना. आप डेली अगर इफ यू फॉलो दिस ऑन एवरी डे, इट्स हैपनिंग कि ट्रांसजेंडर जो है दे आर बीइंग किल्ड. व्हाई? नो रीजन, बस दिल किया तो कर लिया. दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन आवर सोसाइटी. तो जो जेंडर स्टडीज होती है ना, it not only focuses on women's studies, it also focuses on their rights and what's happening with them. जो जितना कुछ उनके साथ हो रहा है, it also focuses on all that as well. तो 1970s में जो है ना, because this is where it all started. 1970s ही basically is when it all started for women's studies and gender studies. यूके में जो है ना, women's studies के programs establish हो गए थे, और उस टाइम पे बस ये क्रिटिसिज्म थी कि वुमेन स्टडीज जो है ना, इट्स अ वेरी नैरो कॉन्सेप्ट एंड इट ओनली फोकसेस ऑन फीमेल आइडेंटिटी, और इट इग्नोर्स जो बड़े बड़े इश्यूज हैं, इंटरसेक्सुअलिटी, सेक्सिज्म एंड ऑल दैट, इट इग्नोर्स ऑल दैट. तो फिर जो है ना, दे इंट्रोड्यूस्ड फिर मतलब इट वेंट इनटू अ ट्रांजिशन. हम वुमेन स्टडीज से हम लोग जेंडर स्टडीज में गए हैं. वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि हम किस तरह ये सारा कुछ हम लोग
यस एग्जैक्टली शफीक, बहुत ज़्यादा कॉमन है. इट्स ऑनेस्टली वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी कि जो हमारी जो कम्युनिटी में ट्रांसजेंडर के साथ हो रहा है वो क्या क्या हो रहा है. And the thing is it's not even their fault. This is अल्लाह की कुदरत है, and we cannot do anything about it. So I don't know who has given us the right to treat someone that poorly. तो जो gender studies है ना, it looks into that. It actually is working on research for that. Theories उसकी पढ़ रहे होते हैं लोग. इस पे data publish होता है हर साल. And that is all very important. क्योंकि इसी तरह जो है ना हम एक conversation start करते हैं, इसी तरह से हम laws pass करवाते हैं. And जो अभी जो ट्रांसजेंडर्स की जो हमारी कम्युनिटी उनको जो मैंने आइडेंटिटी कार्ड की बात की है कि उस पर उनको एक्स जेंडर, एक मेल फीमेल वाला जेंडर है, देन देयर इज एन एक्स जेंडर, एंड दैट इज फॉर ट्रांसजेंडर्स. एंड इट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्वर्सेशंस. वी ऑलवेज ओवरलुक कि हम जो ये बातें करते हैं ना, जो ये जो रिसर्च हो रही होती है, जो कॉन्वर्सेशन ऑन द डेली हो रही होती है, द इम्पैक्ट ऑफ इट हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं, बट इट ऑलवेज हैज एन इम्पैक्ट. और नॉट इट माइट नॉट हैव अ शॉर्ट टर्म इफेक्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है ना इसके जो है असरात हमें नजर आ रहे होते हैं. तो दिस इज व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट. तो जेंडर स्टडीज जो है वो यही देखती है कि इट लुक्स एट ऑल दैट. खैर, अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट वुमेन टू जेंडर स्टडीज. तो वुमेन स्टडीज लाइक आई सेड कि एक नैरो कॉन्सेप्ट था. इट वाज ओनली फोकसिंग ऑन फीमेल की जो आइडेंटिटी थी उसकी बारे में बात हो रही थी. इट डिड नॉट फोकस ऑन द इम्पैक्ट, और जो उस टाइम सेक्सिज्म चल रही थी वो सारा कुछ नहीं किया. तो व्हाट हैपेंड वाज कि इस डिसिप्लिन को उन्होंने थोड़ा सा ट्रांजिशन में डाल दिया कि हम जेंडर स्टडीज में चले जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इसका इन्फ्लुएंस, इसको हम एक वाइडर इन्फ्लुएंस देखते हैं. और इसमें फिर इन्होंने ऐड किया जो लेस्बियन और गे स्टडीज हैं, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन दैट. लेकिन हम लोग जो सीएसएस के सिलेबस में वो इंक्लूडेड नहीं है, तो वी विल नॉट बी लुकिंग इनटू दैट. बट जस्ट जनरली आपको मैं एक डिफरेंस बता रही हूँ, और समथिंग यू लर्न कि क्वीर थ्योरी हम पढ़ेंगे लेकिन जो विल लुक इनटू अदर थिंग्स एज वेल, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इट्स नॉट हेवीली फोकस्ड इन सीएसएस के सिलेबस. ठीक है. अच्छा जी, तो फिर आते हैं हम लोग इसकी मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज के. हाउ जेंडर स्टडीज जो है, व्हाट डू वी मीन बाय मल्टीडिसिप्लिनरी? बाय मल्टीडिसिप्लिनरी वी मीन कि इसमें जो है ना एक एक्सपर्ट नहीं होता. ठीक है. जेंडर स्टडीज में जो है ना, लाइक यू कैन नॉट जस्ट से कि दिस वुमन शी स्टडी जेंडर स्टडीज एंड शी इज द एक्सपर्ट ऑन इट. दैट इज नॉट द केस. इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी है, क्योंकि इसमें हर डिसिप्लिन से कोई ना कोई आ सकता है, एंड दे कैन गिव देयर लाइक प्रोवाइड देयर एक्सपर्टीज. ठीक है. सारे लाइक हमने वो स्टार्ट में पढ़ा था कि ये ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेस, नेचुरल साइंसेस से स्टेम करके आ रहा है. तो जो अब फॉर इंस्टेंस अ फीमेल हु इज एन इंजीनियर, अब उसको उनका जो बैकग्राउंड है वो तो इंजीनियरिंग है, बट शी कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन इन जेंडर स्टडीज. शी कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ the statistics and the impact and the conversation जो हम कर रहे होते हैं. So she can also be part of that, even though gender studies is not her bachelor, उन्होंने bachelor's वगैरह इसमें तो नहीं किया. तो इट्स मल्टीडिसिप्लिनरी ना, कोई भी एक्सपर्ट जो अपने फील्ड में होता है वो जेंडर स्टडीज में इन्वॉल्व हो सकता है, एंड दे कैन लर्न अबाउट इट. अच्छा, ये क्वेश्चन भी हमने देखा था अभी इन वन ऑफ द पास्ट पेपर्स के. एक डिबेट चल रही है ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन की, एक डिबेट चल रही है. No, Shafiq, that is the whole conversation we just had. Gender studies is not just about female. It is about different genders. It is about male rights भी बात हो रही होती है, female rights भी बात हो रही होती है, transgenders भी बात हो रही होती है. It is about different ways कि gender किस तरह जो है ना हमारी सोसाइटी में relevant है, and the impact of it. What is producing this thought process for us? Are you following me, Shafiq? Are you understanding my thought pattern कि gender studies is not just related to females. इसमें हम और भी बहुत चीजें देखा जाता है, जैसे कि मैंने भी आपको कहा कि transgenders is one, जो lesbian gay जो एक conversation है that is one. Power relations की बात होती है कि someone who is in power, how are they impacting those who are not in power. ये चीजें भी देखी जाती हैं. Feminism movements भी देखे जाते हैं. पॉलिटिक्स भी देखा जाता है, इकोनॉमी भी देखी जाती है. इट इज वेरी रेलिवेंट टू एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड अस. ठीक है. अच्छा, तो ये डिबेट की हम बात कर रहे थे.
पास्ट ये क्वेश्चन रिपीट भी बहुत ज्यादा होता है CSS के जो पेपर्स हैं, एंड दैट इज व्हाई आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग CSS जनरल स्टडीज ऑप्ट करें, बिकॉज क्वेश्चंस आर रिपीटेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, 2-3 तो हो ही जाते हैं, एंड इट्स वेरी इजी टू मतलब अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हो। अच्छा, तो ये जो डिबेट है ना, ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन, कैन समवन टेल मी व्हाट ऑटोनॉमी मींस? मुझे जरा आप बताएं आप ना। That's good, Salim. I'm glad I was helpful. And if you have any more questions, please feel free to ask. Anyone can ask any questions. I'm more than happy to have this conversation with you. अच्छा, so please in the chat, everyone, मुझे बताएं कि do you know what autonomy means? You should know what autonomy means. तो आप मुझे बताओ. You can Google it and tell me as well if you want. It's just an English word that you can give me a definition for. Anyone? Guess भी कर लें. हाँ, ठीक है. Yes. Anyone else? हम जो कहते हैं ऑटोनोमस स्टेट, उसका क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट, राइट? सेपरेट फ्रॉम एवरीवन एल्स. अच्छा, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? सेल्फ गवर्निंग. वेरी गुड. यस. खुद मुख्तार रियासत. यस, एग्जैक्टली. अच्छा, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? एसोसिएशन. इंक्लूडेड जो होता है ना, कि उर्दू में नहीं पता. इंग्लिश में बता दें शफीक. इट्स ओके. मिंगल्ड. लेकिन पता है, बस सही है, एज लॉन्ग एज यू नो. तो ठीक है. सो इट इज एग्जैक्टली व्हाट इट मींस. ये जो वर्ड्स हैं इसमें और कुछ नहीं. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट मींस. ऑटोनॉमी. बट हम लोग इसको अप्लाई करते हैं जनरल स्टडीज पे. तो ऑटोनॉमी हम क्या कहते हैं कि जनरल स्टडीज जो एज अ सब्जेक्ट जो है ना, एज अ डिसिप्लिन है, इसको कैसे पढ़ा जाए. तो जो ऑटोनॉमी वाले जो लोग फॉलोअर्स हैं ना, और जो इसको सपोर्ट करते हैं, दे से कि जनरल स्टडीज जो है ना एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए. सो लाइक इसको जो है ना एक, इट शुड बी इन इट्स ओन डिग्री. ठीक है. एक हम जो मतलब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यू कैन पिक कि आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, IR पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है. तो ऑटोनॉमी वाले कहते हैं कि जनरल स्टडीज शुड आल्सो बी एन ऑप्शन देयर फॉर पीपल टू पिक एज लाइक अ सब्जेक्ट, एज इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट कि पढ़ा जाए ना. दैट्स व्हाट ऑटोनॉमी सेज. इंटीग्रेशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन जो के लोग होते हैं वो कहते हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो प्रोपोनेंट्स हैं, दे से कि नहीं, इसको आप जो है कोलैबोरेशन में डाल दो. तो फॉर इंस्टेंस मेरी यूनिवर्सिटी में क्या होता था? मेरी यूनिवर्सिटी में ये होता था कि यू हैव टू टेक, अब इस तरह फॉर इंस्टेंस जो इसमें CSS में देखा जाए, वी हैव कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड देन वी हैव ऑप्शनल्स. तो जो इंटीग्रेशन वाले लोग होंगे ना, इन दिस कॉन्टेक्स्ट दे से कि जनरल स्टडीज को आप कंपल्सरीज में डाल दो, ताकि एवरीवन शुड लर्न अबाउट इट एंड एवरीवन शुड नो अबाउट इट. तो यूनिवर्सिटीज में भी वो कह रहे हैं कि जो अब फॉर इंस्टेंस इकोनॉमिक्स के कोई किसी का मेजर इकोनॉमिक्स है, तो उसके लिए आप रिक्वायरमेंट डाल दो कि दे लर्न about gender studies. ठीक है. and do not make it a separate field, integrated with other जो मेजर्स हैं उनके साथ आप इंटीग्रेट करो. पॉलिटिकल साइंस में भी इसको आप डाल दो, कंपल्सरी कर दो इसको. इकोनॉमिक्स में भी डाल दो, IR में भी डाल दो, इंजीनियरिंग में भी डाल दो. तो लाइक मतलब फर्स्ट ईयर में आप क्लासेस जो ले रहे होते हैं ना, तो उसमें जेंडर स्टडीज शुड बी वन ऑफ द सब्जेक्ट्स. तो दैट्स द मेन डिफरेंस. ठीक है. फिर ऑटोनॉमी वाले कहते हैं कि जब राइट से बात आती है ना, कि हम कहते हैं कि मुझे ये वाला राइट दो, तो ऑटोनॉमी वाले कहते हैं कि इफ एनी जेंडर और सेक्स वांट टू गेट राइट्स, देयर स्ट्रगल मस्ट बी इंडिपेंडेंट. तो फॉर इंस्टेंस ट्रांसजेंडर्स की अगर हम बात करें कि वो कह रहे हैं कि आई वांट दीज राइट्स, तो ऑटोनॉमी वाले कहेंगे कि वो जो है ना खुद से बस सारा कुछ करें. दे शुड बी द वन टू स्पीक अप फॉर देमसेल्व्स. दे शुड बी द वन to come up with ideas. They should be the one to come up with slogans. They should be the one to approach people. They should be the one to gather people. ठीक है. That is what autonomy वाले लोग कहते हैं. और अगर हम फिर फेमिनिज्म पे आ जाएं, फेमिनिस्ट मूवमेंट से बात आ जाए, औरत मार्च इज अ हॉट डिबेट. हर साल मार्च में ये होता है. उसमें क्या कहते हैं, अगर अगर ऑटोनॉमी, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम ऑटोनॉमी को देखें, तो ऑटोनॉमी वाले कहेंगे कि सिर्फ जो औरतें होती हैं, जो फीमेल होती हैं ऑफ दैट सोसाइटी, दे शुड बी द ओनली वन टू पार्टिसिपेट इन दोज मार्चेस. वाइल इंटीग्रेशन वाले कहेंगे कि नहीं, आप उस मेंबरशिप को एक्सटेंड करो,
let others be part of it as well, let other genders be part of it as well, मतलब allow the men to join the study as well, ठीक है। फिर ऑटोनॉमी वाले कहते हैं वही सिमिलर बात बेसिकली कि जो जिस जिस जेंडर को जो राइट्स चाहिए है ना वो ही सिर्फ मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। while integration वाले से कि नहीं, it's interconnected, different strategies can be used by inviting others who are not part of that community, ठीक है। और फिर इंटीग्रेशन वाले कहते हैं कि एजुकेशन जो है ना that is the key, and ठीक है कि रिफॉर्म्स अगर आप करोगे तो that is the only way for us to teach about gender studies, learn about this and have this conversation even more. So that is the main जो है ना debate. It was started in 1980s. 1980s में conversation start हुई थी क्योंकि उसी टाइम पे हम लोग ये जो हमने देखा है ना कि 1970s और 80s में जो है ना gender studies, women studies की बातें चल रही थी, तो उसी टाइम पे ये debate भी start हो गई थी कि किस तरीके से इसको जो है ना as a field हम introduce कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में। तो इसीलिए इंटीग्रेशन वर्सेस ऑटोनॉमी की बातें चल रही थी कि आप इसको इंटीग्रेट करो विद अदर्स, लाइक आई सेड कि पॉलिटिकल साइंस में इसको इंटीग्रेट करो, इकोनॉमिक्स में इंटीग्रेट करो, बट ऑटोनॉमी वाले कह रहे थे कि नहीं, अगर हमने इंटीग्रेट कर दिया तो इट विल लूज इट्स मीनिंग, इट विल नॉट हैव इट्स ओन रिप्रेजेंटेशन, इट विल जस्ट बी सब्लाइम्ड बाय अदर फील्ड्स। तो वो लोग इसके कंप्लीटली अगेंस्ट थे, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द मेन डिबेट। अच्छा जी, फिर आते हैं हम लोग स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान के। पाकिस्तान में क्या हाल है जेंडर स्टडीज के, हम ये नहीं देख रहे, हम लोग वुमेन राइट वाइट की बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं कि जेंडर स्टडीज एज अ फील्ड क्या चल रहा है आजकल। तो क्या चल रहा है ना कि अभी एट दिस पॉइंट हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं कि वो कौन कौन पढ़ा रहा है ये सारा कुछ। तो 1989 में जो है ना 5 different departments were set up in 5 different universities under the women ministry। तो 1989 में मतलब थोड़ा काम स्टार्ट हुआ था। फिर जो है कायद आज़म यूनिवर्सिटी में जो है अभी हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑफ जेंडर स्टडीज है, वो 2004 में स्टार्ट हुआ, तो बहुत रीसेंट है। मतलब दिस एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग विद जेंडर स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज इज वेरी रीसेंट इन पाकिस्तान एज इट इज इन अदर कंट्रीज एज वेल। फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में भी है एक सेंटर, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में भी है, कराची यूनिवर्सिटी में भी है, और University of St. Jamshoro. That is just like what 5 different universities that have something going on. ये कि that's not enough, ये बहुत कम है अगर हम देखें तो। मतलब every university should have something going on in gender studies because it is a very important topic. It is something that we should learn क्योंकि हमारी जो half जो gender जो population है this is about them. तो हर यूनिवर्सिटी में इसको एक representation मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी at the moment this is quite good, लेकिन there is always room for improvement, और आगे भी हम देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, तो अभी पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं कि जो बैचलर्स ऑफर कर रही हैं जेंडर स्टडीज में, एंड दिस इज द लिस्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध कर रही है, शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये वाली यूनिवर्सिटी जो है मास्टर्स ऑफर कर रही हैं इस फील्ड में, तो कायद आज़म यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एंड लाहौर, वो लोग पीएचडी भी ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मतलब दैट मीन्स कि देयर इज डिमांड फॉर इट, और पीएचडी वैसे ऑफर नहीं करते, देयर इज अ डिमांड फॉर इट, दैट्स व्हाई इट्स बीइंग ऑफर्ड। Lahore College of Women University, Shah Abdul Latif Bhattai University, Islamia University of Bahawalpur, University of Balochistan, and then University of Peshawar, they're also offering a PhD. ठीक है, तो that is what the lecture is basically। हमारा डेमो इतना ही है, लेकिन I hope कि this has helped you all। हम लोग अगर फिर से like we can also look at past papers for the subject as well, कि आप अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लें। लेकिन अगर हम पास्ट पेपर्स देखें तो दिस इज बेसिकली लाइक इट्स, मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था कि यहाँ बहुत सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और इट कैन बी इजीली कवर्ड। तो मतलब आई हाईली रिकमेंड फॉर एवरीवन टू यू नो गो फॉर दिस सब्जेक्ट। अगर आपके कोई क्वेश्चन है प्लीज फील फ्री टू आस्क, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। I'll stop sharing my screen for a while। तो आप लोग प्लीज क्वेश्चंस पूछिए so I can see your questions, and if you have any, अगर नहीं भी हैं तो मतलब you can ask me about other CSS things as well, and I will be more than happy to answer that as well for you। तो I'll just give you a few more minutes, और देखिए अगर आपके पास मतलब how are you feeling so far, let me know, and is there anything else I can provide you with कुछ इन्फॉर्मेशन। और ये तो हमारा सिर्फ डेमो लेक्चर था, हम लोग फिर जब जेंडर स्टडीज को फर्दर पढ़ेंगे तो यू विल सी के
conversations बहुत interesting होती हैं. Something you will never forget. अच्छा, language is gendered. This is a very interesting topic. इसमें मैंने लिखा भी है actually, and I'll share that outline with you at some point. Gender studies has been low scoring as well. What do you say about that? Low scoring की जो बात है ना. अच्छा, तो I'm someone who is not going to support low scoring and high scoring वाली बातें, because I don't believe that there is such thing. I think it's all about your attempt. It's all about how the quality of your answers. अगर आप देखें तो उसी सालों में जो है जिस सालों पे it was termed as a low scoring subject, उसी सालों में there were people who actually got really good scores. So if it was a low scoring, then why did they not get the low score? So this is not like, I'm not going to support this conversation or this topic at all. I think you all should know, okay, this is not just for gender studies, in any subject. आपको लोग कहेंगे कि political science लो, IR लो, and I don't want you to like follow that conversation. I do want you to look into integration कि कितना cover कर रहा है आपको. अब देखो political science अगर कोई ले रहा है तो I want you to look into constitutional law, because constitutional law जो है ना, it will be covered in like उसका काफी सारा जो है ना political science में cover हो जाता है. तो ये चीज देखा करो आप लोग, but don't fall for low scoring or high scoring की बातें. It's all going to be, at the end of the day, it's how much effort you put into it, it's how you prepare for it, it is how you make your outlines. जिस तरह आपकी टेक्निक्स होती हैं, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, जो कि हम कवर करेंगे when we go further with this subject. तो you're still confused whether you should opt sociology or gender studies. I say gender studies because gender studies is very simple, very easy. बहुत छोटा सा इसका वो है कोर्स है, बहुत जल्दी हो जाएगा. Sociology भी, sociology is also very easy and simple, कोई इतना उसमें भी नहीं है, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा है ना, उसका लेंथ है बहुत ज़्यादा. While gender studies is short and sweet और जल्दी कवर हो जाता है, and it's very interesting. The conversations are going to be really fun. Like you'll enjoy the conversations and you will not forget कि जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. तो आई विल से कि गो फॉर जेंडर स्टडीज. व्हाट एल्स आर यू चूजिंग शफीक? हम आपके और कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? आई थिंक यू टोल्ड मी, लेकिन आई फॉरगॉट. तो आप जरा मुझे बताओ कि आपके और कौन कौन से वाले हैं. और समवन आस्क्ड, सलीमा, यू सेड कि जेंडर लैंग्वेज इज जेंडर ना, हम इसको कैसे करेंगे? तो इसको जो है ना, इसके हम अभी एट द मोमेंट ना, आई कैन नॉट गिव यू एन आउटलाइन और एनीथिंग, लेकिन दिस इज अ वेरी कूल टॉपिक एक्चुअली. इसको हम करेंगे. मैंने इस पर थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमारी जो लैंग्वेज होती है ना, जिसमें हम कॉन्स्टेंटली जो है, अब हम लोग whenever we see something strong we always associate it with what, male, ठीक है. लेकिन अगर हम कुछ मतलब थोड़ा सा कुछ नरम से देखें और कुछ इजी से देखें, and something soft or like delicate, like हम लोग उसको हमेशा फीमेल के साथ एसोसिएट करेंगे. तो हम like for instance अगर हम से कहेंगे कि she is delicate like a flower, like ये this is a gendered language. हमारी जो लैंग्वेज है हमारी इतनी डेवलप हो गई है ना कि हम लोग हर चीज को जो है ना जेंडर की लेंस से ही देखते हैं. वी टॉक्ड अबाउट इट कि वो क्यों होता है, कि हमारे पास जेंडर क्लासेस हैं, हमारी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे हैं, जो हमारी फैमिली है, हमारे जो मीडिया है, हमारे जो स्कूल्स हैं, हर जगह पे सिट लाइक अ लेडी एंड एक्ट लाइक दिस, एक्ट लाइक अ मैन, दैट दिस इज ऑल जेंडर लैंग्वेज. ठीक है, चेयरमैन, दैट्स मैन, एग्जैक्टली. तो ठीक है. हाँ, तो अगर हम कहेंगे फॉर इंस्टेंस के अभी एक वो चल रहा है, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्वर्सेशन बिकॉज ऑफ जेंडर स्टडीज, कि वाई जो जितने पावर के जो पावरफुल जो वो होता है ना पोजीशंस होती हैं, लाइक चेयरमैन, ठीक है, वो क्यों जो है ना मैन है, व्हाई इज इट नॉट अ चेयरपर्सन? और अभी जो है ना इन द वेस्ट एक्चुअली पीपल आर फोकसिंग ऑन दिस, कि दे आर वाचिंग द लैंग्वेज एंड दे ट्राइंग टू फिगर आउट कि हम लोग सिर्फ ये ना बोले, बिकॉज दिस इज, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत डेवलप हो चुके हैं कॉन्वर्सेशन. हमारे पाकिस्तान में भी ये इतनी डेवलप कॉन्वर्सेशन नहीं है. If you talk about it, people are going to laugh at it because it's not something we normally discuss, right? लेकिन वहाँ पे जो है ना it's taken seriously. तो वहाँ पे अभी आप you won't see के chairman, ये आप वहाँ पे ये नहीं देखोगे. You'll see chairperson. वो तो this is a language कि हम हमारी natural language इतनी हमारी वो हो गई है ना, develop हो गई है कि हम it's all gendered. हर चीज में जो है ना हम लोग man woman करते हैं. Shafiq, how to manage time for studies while doing a job? It will always
depend on you कि how much you want it. ठीक है, अगर आपको this is something you really really want, you will be able to figure it out. और the thing is कि if you have started preparing right now, तो आपके पास अभी actually time काफी ज़्यादा है, so you have to give your studies a significant time. थोड़ा सा देना चाहिए आपको, 4 to 5 hours, and again it depends on your own, जो आपका background है, कितना पढ़ा हुआ है आपने, कितना नहीं पढ़ा हुआ, तो it will all depend on that. लेकिन आप daily अगर आप 4 hours भी दोगे ना, तो like it's really good. And it depends, again this is not a set rule, ठीक है, ये आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है. Harsh or hard things are situation associated with male or soft perception associated with male. Yes, Salima, that's right. You're right. इसको हम और भी मतलब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, and I told you कि हम सारे जो past papers हैं उनके outlines बनाएंगे, because that is one great way of covering any CSS subject. कि आप past papers के questions बनाओ, because questions repeat बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर आप outlines बनाओगे ना, तो you're going to be able to cover like at least 2 or 3 of your questions in a paper. ठीक है, तो if you have any other questions, please feel free to ask. Miraj, how am I going to describe gender studies? जो मैंने एक when I took an hour and a half. Like in gender studies, like if I would like to clear a misconception कि gender studies is not just about women's studies. It's not about female identity only. Gender studies में हम लोग बहुत डिफरेंट चीज़ें कवर करते हैं. वी टॉक अबाउट ट्रांसजेंडर जो होते हैं, वी टॉक अबाउट पावर रिलेशंस की बात करते हैं हम लोग जो है ना, जो हमारे जितने डिफरेंट जेंडर्स हैं उनका इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, हेल्थ, एजुकेशन, डेली जो हमारे लाइफ स्टाइल है उसमें जितना इसका इम्पैक्ट है, वी लुक एट ऑल दैट एज वेल. तो दैट्स Yes, Miraj, exactly. You can watch. This is actually being shared on Facebook as well. So, or you can go to our Facebook and you can rewatch this whole lecture, and you can also go to our YouTube channel, and also you can register and take further classes with me, and I will be going into all the topics in detail. तो वहाँ से भी आप देख सकते हो सारा कुछ. And हमारे registrations open है, तो please do contact this number that is being provided by CEPI Pakistan right now. ये number आप note down कर लें. And हमारे रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, तो हम सारा डिकंस्ट्रक्ट करेंगे जेंडर स्टडीज को इन फर्दर, इन हमारे जितने भी 10-11 लेक्चर्स होंगे उसमें हम सारा कुछ करेंगे. एंड उसमें हम जो है, लाइक आई सेड अर्लियर इन द क्लास, कि हम लोग पास्ट पेपर्स देखेंगे, हम लोग FPSC का सिलेबस सारा फॉलो करेंगे, we will do mock exams, we will check your assignments, you will have individual guidance, and you can always contact me, and I will be checking your assignments, and I will provide जो आपको जितने भी आपको गाइडेंस की जरूरत होती है, I will do that as well. हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस ये करेंगे आपके लिए. तो please do register, and if you don't have any more questions, then we will probably end this session in just a few minutes. तो अगर आपके कोई questions हैं, कुछ भी है, तो बस you have a couple more minutes, आप पूछ लें. Okay, I think yes, Shafiq. जो ऑप्शनल्स के होंगे वो कंपलसरी के बाद स्टार्ट होंगे. सो यू विल ऑल कवर द कंपलसरीज वन फर्स्ट, फिर उसके बाद जो है ऑप्शंस होंगे. एंड दैट इज एक्चुअली अ गुड वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर CSS एज वेल, कि आप जरा आप स्टार्ट कंपलसरी के साथ करो एंड गिव दैट सम टाइम, और उसके बाद आराम से आप ऑप्शनल्स पिक करो, बिकॉज यू कैन डू दैट इजीली. उसमें थोड़ा हो जाता है, लेकिन कंपलसरी जरा टाइम लगाते हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट मोर इन्वॉल्व देयर. Please recommend a book. I will recommend a book once you register for a class. I'm just kidding. Actually, हम ऐसे कर सकते हैं ना कि I'll send you a list of them. मेरे पास actually I have like a list of the books that I have used to prepare my मतलब lecture तैयार करने के लिए सारा कुछ. तो मैं आपको वो list send कर देती हूँ. आप वहाँ से देख सकते हैं सारा कुछ. Beanish, you are actually going for gender studies. I'm glad I was able to convince some of you to go for it. It's a very good subject. I highly, highly recommend it. अच्छा जी, if you don't have any more questions, फिर हम लोग बस चलते हैं. And then I hope to see some of you in future classes में देखते हैं. और आप लोग जो है जितने भी आपके questions वगैरह हैं, और if you have any questions, registration के लिए सारा कुछ please WhatsApp us. आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, एंड ये ऊपर यहाँ पे है 0. I'll send it again in case someone missed it.
ये लें आपके पास फिर से आ गया number, or you can always just message us and we will provide you all the details for everything else. So thank you so much, everyone, and I hope this was helpful, and I hope to see you all in my